In this lecture, we will try to find work done by various forces acting on an object. Suppose a block of mass 2 kg is placed on a horizontal surface with coefficient of friction equal to zero point 0.2, and let a force of 10 newton is applied on the block in this very direction, and the object gets displaced through 4 meter. And all we need to is we need to find work done by the force of the gravity, by normal force, by applied force, by frictional force. In order to solve the question, first we will draw the free body diagram of the block as shown. So here it is a block. Since its mass is 2 kg, force of gravity will be in downward direction, and this force of gravity will be equal to mg, that is 2g, where g is acceleration due to gravity. Since the displacement is in this very direction, this is displacement, so for first calculation we can see here that the force of the gravity, which is vertically down, is making an angle of 90 degree with the direction of the displacement. So work done by gravity will surely be equal to 0 because theta is 90 degree. Or we can say work done by the gravity will be equal to force into displacement into cos of 90 degree. Cos 90 is 0. So work done by gravity will be equal to 0. That is, gravity will be doing 0 work on the block. Now, again, we need to find work done by the normal force. So in the diagram, we can see here normal force is in upward direction. Weight is vertically down, and normal force will be in upward direction. So this is normal force. Again, in this case, normal force is making an angle of 90 degree with the direction of displacement. Because the object is moving in this very direction and normal direction is upward, so work done by normal force will again be equal to 0 because theta is again equal to 90 degree. So what is work done by normal direction? So for part second, work done by normal direction will again be equal to 0. Now, in third part, we need to find work done by the force, by applied force. Applied force is in this very direction. This is applied force, and applied force is 10 Newton. This is applied force. So applied force will be doing work, and there will be 0 angle between the applied force and the displacement. So work done by applied force will be equal to work done by applied force. Work done by applied force will be equal to force into displacement into cos of theta. Here applied force is 10 Newton. Displacement is 4 meter. Displacement is 4 meter. So, and again 4 meter, and again theta is 0. So cos 0 is, because applied force and displacement are in same direction, cos 0 is 1. So it is equal to 40 joule. That means applied force is doing 40 joule of work on the block. So in the present scenario, we can see here that gravity is doing 0 work, normal force is doing 0 work, but the applied force will be doing 40 joule of work. Now, for the last very important point, we need to find work done by the frictional force. So work done by frictional force can be calculated like this. We know that work done by the force is always equal to work done by frictional force. Work done by friction will be equal to force into displacement into cos theta. So again, we know that frictional force is equal to mu times normal reaction. Mu times normal force. Displacement is S, and it is cos of theta. So in present scene, we can see here it is mu. Normal reaction is always equal to weight. In this present case, normal reaction is equal to weight of the object. So N is equal to 2g. So I can write N equal to 2g. Displacement is 4. And in present scene, theta is the angle between force and displacement. Force is frictional force is in backward direction. This is frictional force. Displacement is in forward direction. So there is angle of 180 degree between the frictional force and the displacement. So I can write as cos theta is 180 degree. So coefficient of friction is given as 0.2.
it is 2 into g's acceleration due to gravity equal to 10. It is 4 cos 1, it is minus 1. So from the calculations it is 4 into 10 is 40, into 2 is 80, 80 into 2 is 116. That means minus 16 joule. 16 joule of work is done on the block. So this is how we can find for work done by the various forces acting on the block. So again, I can see the calculation. It is 10 into 4 is 40, 40 into 2 is 80, 80 into 2 is 160, and it is 116 because there is point here, so it is minus 16 joule. So frictional force is doing negative work done on the block. Now, और एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक ऑब्जेक्ट 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है. ऑब्जेक्ट मूव करता है हॉरिजॉन्टली, 5 मीटर ये ट्रैवल करता है, यानी डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2. फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फिर से ग्रेविटी की वजह से वर्क डन ढूंढना होगा. सेकेंड पार्ट, हमें वर्क डन ढूंढना होगा नॉर्मल फोर्स की वजह से, नॉर्मल फोर्स कितना वर्क कर रहा है. और एक पार्ट, वी नीड टू फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना वर्क कर रहा है. और चौथा पार्ट, वी नीड टू फाइंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. फिर से बराबर ये 4 केसेस बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी चेंज था. तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा. इसके लिए ये ब्लॉक हमारा है, दिस इज ब्लॉक. और अगर हम फिर से यहाँ पर देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर है, ग्रेविटी विल बी वर्टिकली डाउन, ग्रेविटी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी 5g. फिर से ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल. तो पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा, व्हाट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी, इट इज इक्वल टू 0. क्यों, बिकॉज थीटा कितना है, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो ग्रेविटी इज डूइंग 0 वर्क. अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखेंगे नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ की ओर होगा, नॉर्मल डायरेक्शन इज अपवर्ड डायरेक्शन. सो नॉर्मल फोर्स जो है ऊपर की ओर होगा, डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर है. सो दूसरे पार्ट का आंसर क्या आएगा, शाबाश, दूसरे पार्ट का आंसर आएगा वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, इट इज़ अगेन इक्वल टू 0. फिर से नॉर्मल फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा होगा, बिकॉज नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है टुवर्ड्स राइट. सो फिर से डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर और नॉर्मल फोर्स जो है वो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. सो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स विल अगेन बी इक्वल टू 0. लेकिन अभी अप्लाइड फोर्स की अगर हम बात करेंगे, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है, दिस इज अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन का है, 50 न्यूटन. और अप्लाइड फोर्स कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, 37 डिग्री. तो अब नॉर्मली अगर हम चेक करने की कोशिश करेंगे, तीसरे पार्ट का आंसर, व्हाट इज वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स कितना वर्क करेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. अप्लाइड फोर्स कितना भी, शाबाश, इट इज़ 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5 मीटर और कॉस थीटा यानी कॉस 37. सो दैट इज इक्वल टू 250 इंटू कॉस 37 जो होता है, इट इज़ इक्वल टू 4/5. कॉस 37 4/5 के बराबर होता है. इट इज़ 5 इंटू 1 5 इंटू 50 एंड दैट इज इक्वल टू 200 joule of work is done by the force by applied force. So applied force 200 joule का वर्क करेगा, बिकॉज वर्क डन हमेशा होता है fs cos थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ द एंगल. थीटा कितना दिया है, 37 डिग्री से दिया हुआ है. सो इसके बाद अगर हम देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ की ओर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट की ओर होगा, यहाँ की ओर, दिस विल बी फ्रिक्शनल फोर्स. लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स अभी किसके बराबर होगा, अभी सिर्फ नॉर्मल फोर्स. अगर हम देखेंगे इस फोर्स को अगर हमने रिजॉल्व किया हुआ है, यहाँ से इसका कोसाइन कंपोनेंट आया, तो ऊपर से यहाँ से कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट. यानी 50 का ऊपर से कितना होगा, 50 साइन 37, 50 साइन 37 डिग्री. सो दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स, एक तो नॉर्मल है और ये अप्लाइड फोर्स का साइन कंपोनेंट. सो अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोशन नहीं है, सो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस हैं. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाले फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होंगे, यानी नॉर्मल प्लस 50 का ऊपर से साइन कंपोनेंट है, यानी n प्लस 50 साइन 37. दिस विल बी इक्वल टू वेट mg 5g.
सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नॉर्मल फोर्स प्लस 50 साइन 37 इज इक्वल टू एम जी. सो एम चूंकि दिया हुआ है इट इज़ 5G. सो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आएगा? इट विल बी इक्वल टू 5G माइनस 50 साइन 37. सो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 5 इंटू 10 माइनस 50 साइन 37 हमेशा होता है 3/5 के बराबर. सो कैंसिलेशन यहाँ पर हो जाएगी. सो व्हाट इज़ नॉर्मल फोर्स इक्वल? इट इज़ 50 माइनस 30. सो नॉर्मल फोर्स जो आ रहा है इट इज़ 20. सो अब हमें निकालना है work done by friction. So work done by frictional force will be equal to frictional force into displacement into cos theta. फ्रिक्शनल फोर्स म्यू टाइम्स नॉर्मल होता है, इसीलिए पहले नॉर्मल निकालना पड़ा. सो डिस्प्लेसमेंट जो दी हुई है एस, इट इज़ कॉस. फ्रिक्शन पीछे की ओर होगा, फ्रिक्शन पीछे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर है. सो थीटा 180 बनेगा. मैं लिखूँगा इट इज़ 180. सो म्यू दिया हुआ है 0.4. नॉर्मल फोर्स दिया है, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू है 20. डिस्प्लेसमेंट इज़ 5 मीटर. कॉस 180 इज़ -1. सो ये क्या बनेगा 0.4 इंटू माइनस यहाँ आएगा इट इज़ 100. सो यहाँ पे बनेगा -40 जूल ऑफ वर्क विल बी डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एंड इट इज़ नेगेटिव.